हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं लेके हाजिर हो चुकी हूँ पार्ट 3 ऑफ द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी वैट की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस विद सैंपल सेंटेंसेस। इससे पहले दो पार्ट्स में मैंने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए और उनके सैंपल सेंटेंसेस भी आपके साथ डिस्कस किए टू लेट यू नो कि वर्ड्स कैसे आपको पूछा जाएगा आपके एसएसबी इंटरव्यू में जब psychological test होगा। and you all know that VAT is the second psychological test which takes place after thematic perception test or TAT। इसमें आपको पता है कि स्क्रीन में 60 वर्ड्स आपको दिखाए जाएंगे एक के बाद एक 15 सेकेंड्स के लिए। हर एक कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा उस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखने के लिए और इस सेंटेंस के थ्रू साइकोलॉजिस्ट जो है आपके अंदर के क्वालिटीज यानी OLQs को इवेल्युएट करेंगे। तो मैं आज के सेशन में सिर्फ आपको वर्ड्स नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह के सेंटेंस लिखने से किस तरह के क्वालिटीज को इवेलुएट किया जाएगा। यानी अगर आप कोई पर्टिकुलर सेंटेंस उस वर्ड के लिए लिख रहे हो तो साइकोलॉजिस्ट कैसे उस सेंटेंस को पढ़ के कौन से क्वालिटी को आपके अंदर से जो है वो ढूंढ के निकालेंगे, वो इवेलुएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच फर्दर अडू। द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेज सेशन दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू के लिए आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीस टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूड विद द पीएम्स विजिट। ये आपके अपडेटेड होने का, करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज दिखाएगा साइकोलॉजिस्ट को। द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट ऑफ स्टडिंग डेली हेल्प्ड हिम क्रैक द रिटन एग्जाम। ये दिखाएगा कि दैट यू आर अ वेरी कमिटेड पर्सन। The continuum of the ongoing metro project got disturbed due to technical failure। ये भी आपके करंट अफेयर्स यानी नॉलेज को आपके साइकोलॉजिस्ट को शो करेगा ना। यू कैन सी हियर कि मैं हर एक वर्ड के लिए तीन तीन सेंटेंस दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बैठ के एग्जाम में तीन सेंटेंसेस लिखना है, आपको बस एक ही सेंटेंस एक वर्ड के लिए लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिमिट। लिमिट के लिए आप लिख सकते हैं फॉलोइंग स्पीड लिमिट ऑन रोड्स हेल्प्स प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। दिस विल शो दैट यू आर अ वेरी केयरफुल पर्सन, यू आर अ लॉ अबाइडर, you are an ideal citizen of India. Keeping a limit to our goals restrict us from succeeding. It also show that you are a go-getter kind of a person, you are a planner and you are an achiever. India was limited to ammunition and ration during the Kargil war, yet we won. So you can see here again that how passionately, how dedicatedly you are with the defense forces and how you are aware of the different wars India fought and how India overcame the challenges. The next word was social. So social के लिए आप लिख सकते हो, it's good that social services are trying to satisfy the needs of so many different groups in India to show that you have the spirit of cooperation, you are a very socially active person. It is desirable to exercise some social control over technology. It also shows that you are an initiative taker and a responsible guy. A man with a friendly nature is more socially active. It also shows that you yourself are a socially adaptable person and this is your philosophy to being socially, adaptable with the persons around. The next word let us take is pity. Pity को लेके आप लिख सकते हैं, it's a pity that India is largest arms importer. So judgmental view आपके दिखा रहे हैं यहाँ पे, decision making दिखा रहा है आपका. It's a pity that India is not acting against terrorism on a full scale. It also shows that you're well aware of the national affairs. India feels pity for the Sukma CRPF martyrs. Also shows that what kind of attitude India has as a country for its martyrs, right? So current affairs भी आपका show कर रहा है. Next is climb. This is a very common word, climb. So इसको लेके आप लिख सकते हैं climbing mountains is the best exercise for overall body. तो आपका ये health consciousness दिखा रहा है. Failure is the climbing steps for success. ये दिखा रहा है कि failure से आप डरते नहीं हो. You're a very positive individual. Bachendri Pal is the first Indian woman to climb Mount Everest. This also shows your knowledge. The next word is busy. So for this word, you can write sentences like the doctor was busy ministering to the injured, care to the injured. So this shows that you're a caretaker. Always take time of busy schedule to do what you love. This also shows that you are not only a person who is responsible towards his or her duty, but also talks or also thinks about his or her own well-being. So also shows that you have a learning spirit. Be busy to do what you enjoy doing. Okay, so this is also showing that you are duty bound and you enjoy the duty. The next word is vulgar. It's a negative word. तो इसके लिए आपको तीन जो methods हम लोग use करते हैं, denial method है, antonym method है और solution method है, इसका help आप ले सकते हैं. कुछ examples देख लीजिए. Ranveer Singh has a vulgar taste in fashion. Now this shows that you do not like the fashion of that person, but I would suggest you do not write,
anyone's fashion sense to be vulgar, because let us not be judgmental about it. So you may try to find out some other sentence, not this. So police detained the man passing vulgar comments at Arvind Kejriwal or at women, whatever. Okay, at girls, if teasing the girls, ऐसे भी आप बोल सकते हो if you do not want to mention the name of one person. So this will show that how you have belief or faith in the law and order of the country. A vulgar joke is often rude and sexist, good to be avoided. This shows your gentlemanly etiquette. The next word is worthy, और इसके लिए आप लिख सकते हो worthy मतलब useful. Hard work and dedication proves what you are worthy of. So this shows that you are yourself a hardworking person and you love doing hard work because it will show ultimately your worth to the others. Kohinoor is a worthy jewel which originated from India, shows your knowledge. The beheading carried out by Pakistan's BAT are worthy of an inquiry, showing national affairs as well. Next word is rocket, very very important word. So इसको लेकर बहुत सारे current affairs के related sentences लिख सकते हैं. For example, India launched the South Asia satellite through the GSLV rocket. The Bombay Stock Exchange rocketed to 30,000 for the first time in April 2017. This shows your knowledge about finance and stocks if you're interested in that. Having great determination to a goal needs focus. It is no rocket science. So you can also comment or make your point about how determined person you are through this sentence. The next topic, the next word is illiteracy. तो इसको लेके देखते हैं कैसे sentence बना सकते हैं आप. India has the largest population of illiterates in the world. This shows your national knowledge. Illiteracy is tackled by providing free and compulsory education to every child. This is a very good sentence because this will show a positive attitude towards a negative word like illiteracy, because you know illiteracy is negative, right? तो कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, मतलब आप यहाँ पे सोल्यूशन मेथड का यूज कर रहे हो टू शो हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्पेसिफिकली related to India. With a literacy rate of 63.86%, Bihar has the highest illiteracy rate in India. Also shows your national knowledge and also about the facts. If you're mentioning the facts like this will show that you read newspapers and you're a very factual person. नेक्स्ट वर्ड इज टाइडी. टाइडी मीन्स नीट एंड क्लीन. तो इसको लेके आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं जैसे आई ऑलवेज मेंटेन्ड माई सेल्फ टाइडी एंड ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शो करता है, पर इसको आप थोड़ा सा घुमा के लिख सकते हैं बिकॉज आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू राइट एनी सेंटेंस स्टार्टिंग विद आई और वी. वी से फिर भी लिख सकते हैं बट आई से बिल्कुल नहीं. Mysore is the tidiest city in India as part of the Swachh Bharat survey. यहाँ पे आप भोपाल के बारे में भी बात कर सकते हैं. स्मार्ट स्टेट बनाया गया है, smart city बनाया गया है because also of its tidiness. Keeping our surroundings clean and tidy prevents diseases. This shows that you're a very health conscious, a very hygienic kind of a person. The next word is batch. तो इसको लेकर आप लिख सकते हैं किरण बेदी was the first IPS officer of her batch. She is an inspiration to all of us. This shows your role model, if she has been your role model, and also the knowledge and inspiration. A batch program is processed and run as a single unit. So showing your subject knowledge. I've made batchmates as friends in every course I've been. Again, yeah, I say start order sentences. I would not suggest you to do that. But if you want to show your social skills, you can talk about your class, batch or anything, but in a more general tone. Next word is hijacking, also a negative word. तो इसको लेके आप लिख सकते हैं hijackers are mostly the victims of less self-reliance and poverty. Also, a lot of mind wash, brain wash goes on behind hijackers. Okay, so you can also talk about how these kind of hijacking or hijackers could be prevented. Neerja Bhanot earned Ashok Chakra to tackle hijackers in the plane. आपका ये current affairs या news के बारे में show करेगा. Hijacking a vehicle is illegal offense in India, showing your knowledge of the law. Next word is memory. A lot of good sentences you can write with this word. My best memories are all from the adventure tours I have been. Again, आप यहाँ पे I ना लिख के ऐसे लिख सकते हो that the best memories are all the adventurous activities performed with your friends, with one's friends. So like that, you can write a general statement. So this will show your adventurous spirit. Today's pen drive can hold a memory of 1256 GB at a time. So you can see memory here is not only used as yade, but also the memory of a computer, right? So like this, you can also talk about it if you're into computers and softwares. Taj Mahal was built in the memory of Shah Jahan's wife, Mumtaz Mahal. So again, your knowledgeable nature is being shown. The next word is bring. Very easy words. You can say India's attempts to bring back Dawood Ibrahim are in progress. My passion to join the armed forces brought me to the SSBs. Again, please avoid my and me statements.
India's economic policy is bringing its market to a rise. Again, national awareness ये show कर रहा है. नेक्स्ट इज प्राइस को भी लेके बहुत सारे आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी's फॉलोअर्स इंक्रीज्ड ऑन ट्विटर एंड एफबी फॉलोइंग हिज विनिंग ऑफ नोबेल प्राइज. सो करंट अफेयर्स शो कर रहा है ये. ऑल्सो आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी ये शो कर रहा है, हाउ यू हैव ऑब्जर्व दिस राइज सडनली. 3 साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2015. आप रिसेंटली जो लोग कोई भी प्राइज, पुलित्जर बुक, साहित्य अकेडमी, ऑस्कर, this Nobel Prize, anything you can mention which is more current, okay? Gautam Gambhir donated IPL prize money to families of Sukumar CRPF martyrs. So this is also a very good current affair wala statement. Next, what is heat? Heat को लेकर आप लिख सकते हैं, India faced severe heat this summer with highest temperature being 51 degrees Celsius, which is very true. आजकल इंडिया में आपको पता है सारे स्टेट्स में हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं because of global warming. So you can also bring that into play here. Indian courts are equipped to take the heat out of small disputes. It shows your knowledge about the Indian courts and law and order. Regional Heat is an initiative by the British Council and helps people to open up on stage. This shows how you have been more socially active with participation in different fests and events, and how you do not have any stage fear and all. The next word is encourage, very positive word. तो इससे आप लिख सकते हैं, parents should encourage their children to join the NCC, showing your national interest. Defense aspirants are encouraged by the soldiers sacrificed to join the armed forces, showing your passion, your aspiration. The results have been encouraging enough for trying hard next time. So here you cannot, you can just particularize what kind of results or what exam results you are talking of. Okay. The next word is drink. तो इसको लेकर आप लिख सकते हैं, the habit of drinking a lot can lead to liver damage. Offering a drink to someone is a good icebreaker, showing your socially adaptable skills, your social skills. Explicit advertisements for alcoholic drinks are banned in India, showing your power of expression and also your awareness. The next word is team, a very important word. तो इसको लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे sentences लिख सकते हैं, जैसे the task was achieved by making the team strong and united. This shows that you believe in the unity of the team for achieving success. A work can be completed with the assistance of teammates, also showing your cooperation, your experience working in a team. The people of the country were an admiration for the Indian cricket team during the World Cup, also showing the passion towards helping a team to win. Now I will give you some homework. So I would suggest to all of you to write down one sentence for each of these words in the comments below, and I will mention the person who has written the best comment out of them. So the first word is pet, second is park, third is play, fourth is ground, and the fifth one is walk. So try to write one sentences for each of these words. You can give yourself a time of 15 seconds for each word, so that you can be almost prepared more like how the VAT test will take place in actual SSB. तो आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग था. यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स और उनके 3 रेस्पॉन्सेस आपके साथ डिस्कस किए, और आपको ये भी मैंने दिखाया कि इस तरह आप अगर कोई सेंटेंस लिखोगे तो उसके अंदर से आपका कौन सा क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट इवेलुएट करेंगे. तो ऐसे ही अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन लेना है तो हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर जाइए. दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट. इसमें आपको एसएसबी के बारे में 5 दिन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, फुल डिटेल्स में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिलेंगे, और उसके साथ साथ आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं. लेट मी गिव यू ऑल्सो स्मॉल अनाउंसमेंट हियर दैट आवर लाइव क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 6th of May फॉर द मे बैच. तो अगर आप मे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए और अपना जो है हमारे साथ वक्त गुजारिए, ताकि आपका प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट हो सके. बाकी अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो उसके कोर्सेज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है. ऑल्सो स्मॉल अनाउंसमेंट हियर, हमारे अपकमिंग एनडीएस सीडीएस और एफकेट 2 2024 के लिए जो लाइव क्लासेस है वो बहुत जल्द 13 मई से स्टार्ट होने जा रहा है. तो उससे पहले आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सके. Also, last but not the least, while enrolling, use the code warrior10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट इन कोर्सेस में मिल सके. That was it from my side. I'll hope to see you very soon with the next part, that is part 4 of the VAT sample practice exercises, where I'm going to bring some more sample words for your VAT, and we are going to discuss more sentences and more qualities on them. Till then, stay tuned to us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।